हाय गाइस। सो दुनिया में कोई भी काम सीखने के लिए आपके अंदर जोश होना बहुत ज़रूरी है, पैशन, इंटरेस्ट। एट द एंड यू मस्ट बी हैविंग कंसिस्टेंट नेचर, कि आप में मुस्तकिल मिजाजी हो। कोई काम आपने शुरू करना है तो उसे ख़त्म करना है। अगर ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये हर किसी में मौजूद होती हैं, लेकिन सिर्फ इनको बाहर निकालना होता है, राइट? So you must know how to bring it out, right? It's very easy. So welcome to my channel, English and German with Ifi Khan. So about today's lesson, so first of all we discuss about जैसे हम कहते हैं कि मैं जर्मन सीखता हूँ या मैं जर्मन सीख रहा हूँ, right? So how do you say in German, right? You say मैं जर्मन सीखता हूँ, I learn German in English, and in German ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. In English I learn German. अच्छा, I am learning German या I learn German, इन दोनों का जर्मन में एक ही होगा, ich lerne Deutsch. जर्मन लैंग्वेज में फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है, राइट? सो यानी जब हम ये कहते हैं ich lerne Deutsch, सो आप कह सकते हैं इट मीन्स I learn German या I am learning German. So happy? So okay, happy से मुझे याद आया, so it's very beautiful sentence, like जैसे हम कहते हैं I'm happy, I am happy. So how do you say in German language? Ich bin glücklich. Ich bin glücklich means in English I am happy. In German ich bin glücklich. Okay, good. Okay, so yes is an English word. How do we say in German? In German we say ja means आप यहाँ spelling देखेंगे JA, but in German language the sound of J is ja, right? So we pronounce it ja. So ja, yes, ja. Like no, in German nein. In English no, in German nein. In the same way, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में maybe, in English maybe, शायद. In German we say vielleicht. Vielleicht. Here आपको यहाँ पर vielleicht के शुरू में जो अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा होगा वो है V of English. लेकिन जर्मन में जो V है इसको प्रोनाउंस किया जाता है F. So that's why we say vielleicht. Okay? So maybe, vielleicht, right? So vielleicht. And next is I let you know, एक लफ्ज़ होता है इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं दी. जर्मन में दी के 3 अल्फाज हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ होते हैं. वो कौन कौन से हैं? der, die, das. der, die, das. der जो है ये है मस्कुलाइन, डी जो है ये है फेमिनाइन, और दस जो है ये हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस के साथ, राइट? सो इसका मीन्स इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ. लाइक das Auto मीन्स the car. अब इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं. which sentence? Like where is the car? Where is the car? So कार कहाँ है? So इसको जब हम सेंटेंस में बोलेंगे तो हम बोलेंगे वो ist das Auto. वो ist das Auto. वो means where, ist means is, das Auto means the car. वो ist das Auto. कार कहाँ है? Right? Okay? So इसी तरह नेक्स्ट जो वर्ड है वो है die. So die Frau.
Frau. Frau is woman, it means woman. Frau का मतलब है woman. So इस यहाँ पर आपको R साउंड नज़र आता है, लेकिन in German R को हम साउंड करते हैं g, like, right? So die Frau. So इसको अब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, right? सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे like auto के साथ, means कि वो और means woman is in the car. औरत गाड़ी में है. Die Frau ist im Auto. Die Frau ist im Auto means the woman is in the car. The woman is in the car. Die Frau ist im Auto. Right? Hope it's clear. Okay. Third word is der. अब der जो है ये यूज़ करते हैं means der Mann, right? Der Mann means the man. Der Mann, the man. अब इसको सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं. इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस इसका बनेगा आदमी कार में है, right? आदमी कार में है. The man is in the car. In German, der Mann ist im Auto. Der Mann ist im Auto. Okay? So, hope you understood very well. So, repeat this lesson again and again, and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. Then you can get the notification means about our upcoming videos, right? So please, and repeat this lesson again and again. Make notes. So before going, I told you in the last lesson, before going I told you 3 words, like we say see you soon, yeah, see you tomorrow, goodbye. Do you remember the German? How do we say in German? See you soon, bis bald. See you soon, bis bald. See you tomorrow, bis morgen. Goodbye, tschüss. Goodbye, tschüss.